Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will learn about primitive data types and non-primitive data types in JavaScript. So before moving on to this topic, we need to know what is data type. Data type. Data type defines the type of value a variable can store. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है। सो जावास्क्रिप्ट में दो तरीके के हमारे डेटा टाइप होते हैं। पहला है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरा है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। So primitive data types, also known as built-in data types or predefined data types. Predefined data types. There are 7 primitive data types in JavaScript. 7. First is number. First is number. So let's take an example. Create a variable a and assign number value, which is 14, and check the type of this variable using console.log and using type of operator, which is run the code, and type of a is 14. Type of a is number, and because the value of a is a number, and this is number data types. Second data types in this primitive data types is a string. So string means sequence of character, and we define str variable, declare str variable, and assign uh, a value which is a string and hello world. Let's check the type of this variable which contains a string value. So console.log type of str and run this code. It gives a string. So str का type हमारा string हो गया. Now third primitive data types is Boolean. Let's create bool variable and assign any truthy or false value, यानी truthy and false value. Let's assign true firstly and console.log and print type of bool. So इसका टाइप हमारा boolean आएगा जो कि रिजल्ट में आ रहा है. सो ये हमारा थर्ड टाइप हो गया. अब हम इन सारे को रिमूव कर देंगे. फोर्थ हमारा जो है वो है नल. एंड फिफ्थ हमारा जो डेटा टाइप है वो अनडिफाइंड है. तो मैंने एक वीडियो बनाई थी डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड, जिसमें सब कुछ क्लियर है कि नल क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है, कब यूज किया जाता है. तो अब हम मूव करते हैं 6 डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि है हमारा बिग इंट. बिग इंट डेटा टाइप्स को तब यूज करते हैं जब हमें स्टोर करना हो लार्ज नंबर. यूज व्हेन
store a very large number, very large number. Let's take an example. Num is equals to, in this variable we assign a large value, so like this, and put it n at the end, which denotes this is a very large value. And console dot log type of num, then the type of num is big int, yani big integer. Okay, so our last 7 primitive data types is symbol, and this data types introduce in, okay, ES6 2015. This data type was introduced in ES6 2015, and it is used for storing unique value. We create a symbol, we create the some symbol using symbol function. क्रिएट करके देखते हैं, लाइक हमारा एक s नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम सिंबल को कॉल करेंगे और इसमें आईडी पास कर देंगे। अब अगर हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ सिंबल, ओके, टाइप ऑफ एस करेंगे जिसमें हमारी एक यूनिक वैल्यू स्टोर है, तो इसका टाइप हमारा सिंबल आएगा। अब अगर हम एक s1 वेरिएबल बनाते हैं और इसमें सेम चीज असाइन करते हैं, बट अगर हम s1 और s2 को चेक करेंगे तो ये हमें फॉल्स देगा, क्योंकि ये सिंबल के थ्रू हम यूनिक वैल्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये यूनिक वैल्यू जब क्रिएट करेगा तो इसके बाद S1 में दूसरी यूनिक वैल्यू आएगी, और जब इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो ये हमें फॉल्स देगा, द आउटपुट इज फॉल्स। तो ये हमारे 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए जावास्क्रिप्ट में। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। सो नॉन प्रिमिटिव डेटा types. Non-primitive data types are derived from primitive data types. Okay. It is also known as reference reference uh, reference data type, or derived data type. So in JavaScript there are 3 non-primitive data types. Non-primitive data types. Okay. Non-primitive data types शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट, ओके। सेकंड इज एरे एंड थर्ड इज function. These are non-primitive data types, and non-primitive data types जो है हमारा हीप मेमोरी में स्टोर होता है, ओके।
जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स था वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारा हीप मेमोरी में स्टोर होता है। Object. So what is object in JavaScript? Object are used to store key value pair. Used to store key value pair. Okay. Let me create an object. Okay. Let user is an object, and username is coder, and her age is 24. Okay. And as coder, we assign true value. And now with this code snippet, I'm creating a user object. So name, age coder, all are called key, and it is also called property. And the value like coder, 24 and true, these are called value. So name is key, coder is a value, age is key, 24 is a value, is coder is key, and true is this value. And this value of any type like a string, number, boolean, any type. And we know in object oriented programming language, each object has their properties. So user object has their name property, age property, and is coder property. And we know in programming language, in object oriented programming language, when we create an object, so we can use all the property of that object and all the methods of that object. So we just print uh, the property of this object. So object is user and property is name. So with the help of dot operator, we can access the user property. It means object property, and run this code. So name is coder. So प्रॉपर्टी जो हमारा है यानी की जो है उसकी वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। सो यूजर इज एन ऑब्जेक्ट विथ 3 प्रॉपर्टी, नेम, एज एंड इज कोडर। तो ये हमारा था नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। बाकी ऑब्जेक्ट में भी बहुत चीजें हैं जो हम स्पेसिफिक वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं जो सेकंड हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उसके बारे में। तो सेकंड हमारा आएगा एरे। एरे सो इन जावास्क्रिप्ट, arrays store multiple values in a single variable. What does mean? uh, Arrays store multiple values in a single variable. Okay, what does it mean? Let me create an array. Let arr. So in primitive data types we can store only single value, but in non-primitive data types like object, in object we can store multiple properties in object, and in array we can store multiple values like we create a array, ठीक है, we create an array and store
multiple values like 10, 12, 13. It means to store array allow us to store list of item, and print of this any item of this array just using a square bracket, just using the variable name and a square bracket and the index value. So we want to accessing the value at index second, which is 13, because array follow zero base indexing. Okay, array follows zero base indexing. So 0th इंडेक्स पे हमारा 10 एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा 12 एलिमेंट है एंड सेकेंड इंडेक्स पे हमारा 13 एलिमेंट है, एंड वी आर एक्सेसिंग द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस एरे विच इज ऑन कंसोल 13. सो अब हम पढ़ेंगे थर्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि हमारा है फंक्शन. फंक्शन हमें पता है कि अगर हमें कोई भी स्पेशल टास्क परफॉर्म कराना हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम फंक्शन का यूज करते हैं. ठीक है, तो फंक्शन का यूज करते हैं. फंक्शंस आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, and with the help of function we achieve reusability. Okay, reuse reusability का मतलब है कि सेम कोड आप बार बार नहीं लिख सकते, मतलब बार बार नहीं लिखोगे. आप एक बार उस कोड को किसी फंक्शन में लिखो और उसको रीयूज कर लो, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है. तो फंक्शन के थ्रू हम रीयूजेबिलिटी अचीव करते हैं. एंड जावा स्क्रिप्ट में हमारा जो फंक्शन है वो एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, और इसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं. अब हम क्रिएट करेंगे एक फंक्शन. ओके, फंक्शन, और फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं. लाइक हमें ऐड करना है, तो हमें ऐड करना है दो वैल्यू, तो हम दो पैरामीटर पास करेंगे. और इस फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे तो इनका सम हम रिटर्न कर रहे होंगे. अब इस फंक्शन की हेल्प से हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, कंसोल कर देते हैं, जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे जितनी बार भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उतनी बार हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. उसको बार बार रिपीट मतलब बार बार सेम कोड को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है अपने फाइल में. तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फंक्शन का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, और जो भी वैल्यू है वो पास करेंगे. लाइक वैल्यू 1 की जगह हम 5 पास करना चाहते हैं, और वैल्यू 2 की जगह हम 9 पास करना चाहते हैं. तो ये 5 + 9 रिटर्न करके हमें देगा, और कंसोल पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, विच इज़ 14. 9 + 5 is 14. इस तरीके से हम मल्टीपल फंक्शन अपने नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और उसको टाइम टू टाइम कॉल कर सकते हैं जब भी हमें नीड पड़े. तो फंक्शन की हेल्प से हम रीयूजेबिलिटी अचीव कर सकते हैं. तो ये हमारे मेनली 3 नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं. बाकी हमारे और भी डेटा टाइप्स हैं, लाइक डेट्स हो गया, एंड रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया. तो मेनली जो हमें पढ़ना था 3 नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वो थे ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शन. ओके.